Really, it's a pride moment for me. I never expected that I will be taken up as a member of Rajya Sabha by the Honorable President of India. But yesterday, I received the phone from our beloved Prime Minister, Modi Sahab. And Modi Sahab initially when he talked, Ujjwal ji, राष्ट्रपति महोदया आपको राज्यसभा का मेंबर नियुक्त कर रहे हैं, क्या आप जवाबदारी लेंगे? मैंने हाँ कहना, जिस तरह से विश्वास उन्होंने जताया था, मैंने हाँ कहना बहुत जरूरी था. So I am really proud of, and I must say thank you to Honorable President of India, our beloved Prime Minister. I assure through you that I will discharge my duties as a member of Rajya Sabha, representing Honorable President of India, truly, honestly, and I will see that how the law of our country will be definitely good for the common man, and how we can expedite the legal process. Coming up next on Live and Breaking, huge controversy breaks out over the preliminary crash report. Pilots Association questioned the report and the leaks. Exclusive details on the AI-171 crash investigation only on Republic. Do not go anywhere. We'll be right back after a short break. $13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला. सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप. इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा. रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड. पहाड़ों में एक हाइकिंग स्टिक भी बन सकती है. आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया के अंदर. प्लेन वालों ने इंक्वायरी नहीं की, ऐसे ही प्लेन उड़ा दिया है, ऐसा समझ में आ रहा है. ऐसा होता नहीं है. ये कोई स्कूटर नहीं है कि वो फ्यूल नहीं पहुंचे. ये फ्यूल पहुंचने की बात मैं मानता नहीं हूँ. किसके बारे में क्या है, फ्यूल का प्रॉब्लम है, इंजन का प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी बच्ची घर पहुंचने वाली है नहीं. हर पल मनाओ केसरी त्योहार. विमल, बोलो जुबान केसरी. दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध. MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा. A storm is brewing at the heart of American law enforcement. FBI Director Kash Patel is reportedly on the verge of resigning, threatening to walk away from his post if his deputy, Dan Bongino, follows through on his own plans to quit. The reason? A fiery clash with Attorney General Pam Bondi over the handling of the Jeffrey Epstein case, a controversy that's ignited outrage among MAGA supporters and raised questions about transparency in the Trump administration. The Epstein saga has long haunted political and social circles, with its web of allegations involving powerful figures. President Donald Trump, seen here socializing with Epstein in 1992 at Mar-a-Lago, has faced scrutiny over their past friendship. Trump has since distanced himself, claiming in a recent cabinet meeting that he hadn't been close to Epstein for nearly 2 decades before his death. Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Do you want to waste the time and do you feel like answering? I don't mind answering. I mean, I can't believe you're asking a question.
Hello, ladies and gentlemen, and welcome. This is your 30 minutes of time out at the Positive Influencer Show. I bring to you episode 16, packed with content put together by our wonderful positive influencers. Thank you for joining me, Tanvi Sood. Before I get to what we have and what our creators have lined up for us this week, I want to thank all of you who have been firing in your sample videos. Our teams are crunching through it and working the phones to get back to each one of you. If you haven't hit that apply button yet, go to www.republicpositiveinfluencer.in or just WhatsApp the number on your screen and drop that video sample. Now, let's get to the content. First up and back on the Positive Influencer Show this week is Poornima Kotak. As India's first leadership branding coach, Poornima explains the power of silence in leadership. This is a masterclass packed into the next 5-minute clip because most often it's best not to react in the moment. Poornima tells you how and why silence can be the mightiest statement in leadership. Watch this clip. Namaste. My name is Poornima Kotak and I'm India's first leadership branding coach. Today, let's talk about the power of silence. In a world addicted to noise, silence can be a leader's most powerful statement. Today, everyone feels compelled to react instantly to prove that they are relevant and they are in control. But what is true leadership about? It's about knowing when to pause. Most people think that if you're not speaking, you are not leading. They confuse endless talking with confidence. In reality, leaders who rush to fill the silence often reveal too much too soon. They come across as impulsive, even insecure. So then, how should a leader work? Let's take the example of Prime Minister Modi. He's often criticized for his silence during tense or volatile situations, both within India and on global platforms. But that silence isn't always hesitation. It is strategic restraint. By holding back, he keeps diplomatic channels open, forces adversaries and observers to keep guessing, and often leaves people leaning in and waiting for his words, giving him the power without him even speaking. Silence isn't inactivity. When wise leaders hold back, they're not doing nothing. They are calming down the internal noise, taking an aerial view to see the entire landscape, deep diving to understand every angle and building a 360-degree perspective. They are crafting a strategy, preparing to respond appropriately, not just quickly. This means that they leave no space to be rushed or to later cut a sorry figure by speaking out of turn. And here's the subtle mastery most leaders don't learn. When you practice silence, the world might be completely misreading you. They may think that you have accepted defeat and that you have nothing valuable to say. They may believe that they have even won the narrative or quietly doubt your capability. What should you do? Just let them be. Just let them be. People who are in a hurry often make shallow judgments. Look, leadership isn't a race to prove that you have won every quick battle. It's about holding your ground long enough to respond wisely and not react foolishly. As a leadership branding coach, I see this play out across industries. Leaders who master the art of strategic silence, 1, build gravitas as their pause carries weight. 2, they build their authority as people wait for them to speak.
3, they build an aura of mystery around them because they command rooms even without filling them with their words. So the next time you feel pressured to jump in just to prove that you're involved, take a breather and take a pause. Because sometimes that very pause is where your power rebuilds. Leadership isn't about having the fastest answer. It's about knowing when to speak and letting silence itself elevate your leadership brand. So that's the power of silence, and that's it for today in this video. My name is Poornima Kotak. I'm signing off from this video. Looking forward to meeting you in my next one. From Poornima Kotak's leadership tips to fitness in mind and body. Up next is positive influencer Supreet Singh. He's back with another podcast this week, and this time with a celebrity fitness coach who is telling you how your mental fitness, your wellness, your state of being, how all of it impacts your physical fitness. The mantra seems to be to clean up the mind and your insides if you really want to see results in that mirror. Watch this slice of his podcast, and if you like it, watch the whole thing on his channel. सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप फिट कैसे रहते हो और आपके लिए फिटनेस का मतलब क्या है? फिटनेस का मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डीप है, क्योंकि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ अकॉर्डिंग टू मी फिटनेस इज़ बीइंग मेंटली एंड फिजिकली बोथ फिट, जिसके साथ आप एक हेल्दी रिलेशनशिप्स भी बिल्ड करते हो. टू इलैबोरेट, अगर मैं बोलूँ कि मैं फिज़िकली बहुत ज़्यादा मेरी अच्छी फिज़ीक है पर मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं विद इन द फैमिली और विद इन द फ्रेंड्स और लाइक अपने पार्टनर के साथ, तो मैं फ़िट नहीं हूँ. और अगर मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं किसी भी चीज़ पे बहुत इजीली रिएक्ट कर देता हूँ इन अ नेगेटिव वे, तो मैं फ़िट नहीं हूँ. तो फिटनेस अकॉर्डिंग टू मी ओवरऑल वेलबींग है. जैसे फिज़िकली फ़िट होना, फिज़िकली फ़िट होने का मतलब ये नहीं आप बहुत मस्कुलर हो. फिज़िकली फ़िट होना, यू आर एबल टू डू योर डेली टास्क वेरी इजीली. लाइक डेली जो आपकी एक्टिविटी है, आपका प्रोफेशन है, आप उससे टायर्ड नहीं हो रहे जब आप घर आ रहे हो. दैट मीन्स यू हैव अ गुड मस्कुलर सिस्टम एंड गुड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल. और सेकंड आ जाता है आप मेंटली पॉजिटिव हो और हैप्पी हो. यूजुअली क्या है कि आजकल लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि लोग अपने माइंड के ऊपर काम करते ही नहीं, अपने ऊपर काम करते ही नहीं हैं. उसकी वजह से उनकी बॉडी भी एक गलत वे में रिएक्ट करती है और वो अपने रिलेशनशिप्स भी अच्छे से नहीं हैंडल कर पाते. ये सब ऑब्जर्वेशन मैंने अपने क्लाइंट्स में देखी है, अपने आप में देखी है और जो मेरे क्लोज वंस हैं, क्योंकि मुझे ऑब्जर्व करने का बहुत ज़्यादा शौक है कि भाई कौन कैसे रिएक्ट करता है. तो एक फिज़िकली फिट बंदा कंप्लीटली फिट है ये आप नहीं कह सकते कभी भी. तो एक तो ये वर्ड जो है ना पागल, मुझे यही नहीं समझ आता और मैं सीरियसली आई गेट वेरी फ्यूरियस नहीं कह सकता, आई गेट वेरी डिसअपॉइंटेड कि यहीं से पता चल जाता है कि हम कितने मिस इन्फॉर्मेशन में है. कि एक जैसे हमारा पूरा शरीर है वैसे ही दिमाग है, तो अगर दिमाग सही नहीं चल रहा तो वी हैव टू फिक्स इट. जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका मसल टियर है तो आप उसको ठीक करोगे, तो ऐसे ही अगर आपके कोई your brain is not able to function properly, your mind is not able to function properly, तो आप उस पर काम करोगे. तो ये जो आप बात बोल रहे हो ना कि उसके बारे में खुल के बात होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं मानता हूँ कि जो हमारी जनरेशन है ना, ये मेजर प्रॉब्लम इसमें है. और सबसे बड़ा इम्पैक्ट रीज़न इसका ये है कि भाई स्मार्टफोन्स, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड से ज़्यादा एक डिजिटल वर्ल्ड में हैं सब, और सोशल मीडिया पे किसकी लाइफ में क्या चल रहा है हम वो अपने ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करने देते हैं इंस्टेड कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है. किसी ने कुछ पोस्ट किया, हमें उससे बेटर करना है, जेलसी फैक्टर आ गया. और वो अगर आप हायरार्की ड्रॉ करो तो वो जेलसी फैक्टर कहीं ना कहीं विद इन द रिलेशनशिप्स लड़ाइयाँ लेके आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे नहीं पता आप रिलेट कर सकते हो कि नहीं, कोई कपल है तो उसने दोनों कपल में से किसी ने बोला कि ये यहाँ पे घूमने गए हैं या इसने ये एक्सपेंसिव चीज़ पहनी है, और वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपके घर में लड़ाई हो जाएगी, मैंने भी जाना है. और वो लड़ाई आर्ग्यूमेंट्स
कहाँ तक लेके जाएंगे वो हम नहीं इमेजिन कर सकते। तो आपको हैरान ऑनेस्टली बचाऊँ अभी इस चीज़ में। ये तो बेस्ट चीज़ है कि हम वी नेवर गो बाय व्हाट पीपल से, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो सिर्फ इसीलिए बहुत चीज़ें करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में उनके दोस्त वो दिखा रहे हैं कि वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो एक वो फोमो सा आ जाता है। राइट, एंड यू नेवर नो दैट बिहाइंड दैट पिक्चर और वट एवर वीडियो इट इज़, उसके पीछे कितनी लड़ाइयाँ भी हुई हों या उस वीडियो के बाद कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। ओके, वो नहीं पता ना। अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, पिक्चर हमेशा लोग यही पोस्ट करेंगे जो उनका बेस्ट पार्ट है। कोई बंदा ये नहीं पोस्ट करेगा कि हमारी लड़ाई होगी या हमारे में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ये अभी मैं लंदन गया था ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। आई वाज जस्ट वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, आई थिंक ट्रैफलगर स्क्वायर होगा या वही उसके आसपास ही कहीं था। आई जस्ट सॉ एन इंडियन कपल तो वही है कि अदरवाइज ना जैसे कटे कटे चल रहे हैं, पर जब वो फोटो वीडियो करनी है ना तो वो पूरे पोज अलग बन रहे हैं। और वही जो आप बात बोल रहे हो कि वैसे लड़े पड़े हैं, मतलब शक्ल भी नहीं देखनी, पर वो फोटो दिखा दुनिया को रहे हैं कि हम भाई हमसे ज़्यादा खुश नहीं है कोई। राइट, और गलत फहमियाँ और दुनिया में एक गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो वही एज अ होल सोशल मीडिया के एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, पर डिसएडवांटेज उससे भी ज़्यादा हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस वे में उसे यूज़ करते हो। मिस गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा है, गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि न्यूट्रिशन फील्ड या किसी भी फील्ड में कोई गलत है, सही हर कोई है, पर आजकल सोशल मीडिया पे चलता वो ज़्यादा जो ज़्यादा स्पाइस देता है आपको, तो उस चीज़ में कई लोग मिसगाइडेड भी हो जाते हैं। वो है ना कि एंटरटेनमेंट का तड़का। राइट, क्योंकि फिटनेस न्यूट्रिशन ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ये हमें 9th क्लास में भी पढ़ाई गई हैं। एक सिंपल सा डायग्राम होता था, उसमें एक बैलेंस मील का डायग्राम होता था। अगर उस टाइम पे हमने सिर्फ पास होने की जगह वो सीरियसली नोट किया होता तो शायद आज जिस सिचुएशन में मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसमें ना होती। बट क्या अब जैसे फिटनेस में ग्लैमर आ गया तो इस वजह से अब लोग इसको ज़्यादा सुनना या इसके बारे में बात ज़्यादा कर रहे हैं? इज़ इट ट्रू? ग्लैमर इन द सेंस के ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी हो सकती हैं, बिकॉज इस वजह से हम ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हैं या कुछ है। फिटनेस वही है, फूड वही है, सब कुछ वही है, बस उसको बताने का तरीका अलग है। वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके पीछे, फेमस होने का एक वे भी हो सकता है। बहुत सिंपल है फिटनेस की बात कर रहा हूँ मैं, बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। अब मैं इसी पे दोबारा आऊँगा। कई बार कुछ लोग बहुत फिट दिखते हैं और बट क्या होता है कि थोड़ी देर बाद न्यूज़ आ जाती है कि इसको कोई बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होगी, या जैसे अभी हुआ है शेफाली जरीवाला, या पहले सिद्धार्थ जो बिग बॉस जीते थे, सडन कार्डियक अरेस्ट। अभी मैंने वो एक वीडियो देखी कि जिसमें एक क्रिकेट खेलते हुए राइट मतलब ही डाइड, वो एकदम मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ। एंड दिस इज हैपनिंग टू पीपल इन देयर 30s and 40s एंड दे लुक फिट। सो व्हाट इज दैट रीजन? हमने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की बात की, तो वो क्या है ये? इज इट कोविड के बाद ये होना शुरू हुआ है या मतलब कुछ और रीजन है? ये कोविड के बाद नहीं हुआ, ये इसका पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसके रीज़न भी। अब यूजुअली फर्स्ट चीज़ कोई भी सेलिब्रिटी या कोई फेमस बंदे की ऐसे डेथ होती है, हम सबके दिमाग में क्या आता है, ये इधर स्टेरॉइड्स पे था या साइकिल पे था, पर वो ट्रू नहीं है। आप कोई भी सप्लीमेंट भी यूज़ कर रहे हो, विदाउट सप्लीमेंट भी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला ना, आप मेंटली भी फिट होने चाहिए फिजिकली के साथ साथ। अगर आप माइंड कहीं और है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो विदाउट लाइक प्रॉपर रेस्ट, आप विदाउट प्रॉपर रेस्ट प्री वर्कआउट्स ले रहे हो या ऐसे कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो कि मैं नेक्स्ट डे वर्कआउट कर सकूँ, पर आपका एक्चुअल न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल पिछले कई डेज से ठीक नहीं चल रहा, या फॉर एग्जांपल जैसे सेलिब्रिटीज़ ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनका बिल्कुल मेस्ड अप वो है, स्लीप भी सही नहीं है, उसके साथ जाके आपने कोई सप्लीमेंट लेके नहीं, मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, वो वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। Now, are you feeling like it's getting lonelier as you're climbing up that ladder? Are you wondering why you have fewer circles, fewer conversations, and a smaller and more intimate community despite becoming more successful? We've all heard about loneliness being the price of success.
But it has always been told to us in terms of a negative connotation. Now, positive influencer Prateek Sharma is back on the show this weekend, and he flips the script and tells you why it's not such a bad thing and tells you how to deal with it. क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग कम होते जा रहे हैं? जैसे जैसे आप सीरियस हो रहे हैं, फोकस्ड हो रहे हैं, वैसे वैसे कॉन्वर्सेशंस कम हो रही हैं, दोस्तियां बदल रही हैं और आसपास की दुनिया थोड़ी अजीब सी लगने लगी है। पहले जो लोग हर बात शेयर करते थे, वो अब आपसे दूर से हाय हेलो कर रहे हैं। पहले जिनसे घंटों बातें होती थी, अब उनसे सिर्फ रील्स पर रिएक्शंस आते हैं। ये कोई गलत नहीं है। ये सक्सेस की सबसे पहली कीमत है, अकेलापन। जब आप अपने ड्रीम्स को सीरियसली लेना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। आप पार्टीज में कम और काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। आप हर वीकेंड पर आउटिंग से ज्यादा अपने पैशन पे काम करना पसंद करते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो सफर जो अकेला होता है लेकिन सच्चा होता है। लोग बोलते हैं आप बदल गए हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि बदलना जरूरी था, क्योंकि अगर आप वैसे ही रहते जैसे सब हैं, तो आप भी उसी भीड़ में खो जाते। सक्सेस की जर्नी अलग होती है और अक्सर अकेली भी। आप सोचिए, कोई भी बड़ा इंसान जिसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया है, क्या वो हमेशा भीड़ में था? नहीं, वो अकेले डिसीजंस लेता था, अकेले नाइट्स में मेहनत करता था, और जब सब सो रहे होते थे तब वो खुद को शार्प कर रहा होता था। अकेले रहना कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन क्लैरिटी वहीं से मिलती है। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपनी असल आवाज सुन पाते हैं। तब आपको समझ आता है कि कौन सच में आपके साथ है और कौन बस क्राउड का हिस्सा था। अकेलेपन से डरिए मत, वो एक मौका है खुद से जुड़ने का, अपनी प्रायोरिटीज रिडिफाइन करने का, अपने विजन को साफ साफ देखने का। लेकिन हां, ये इजी नहीं होता। कभी कभी लगता है कि सब साथ छोड़ रहे हैं, कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर वापस उस कंफर्ट जोन में लौट जाएं, जहां कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। लेकिन फिर दिल के अंदर से एक आवाज आती है कि आप इसलिए निकले थे क्योंकि आप खास हैं, और खास लोगों के रास्ते आम नहीं होते। आपको हर बात पर लोगों को समझाना जरूरी नहीं है। लाजमी नहीं है कि हर कोई आपके ड्रीम को सपोर्ट करे। जो आपको नहीं समझते वो आपके रास्ते के लिए बने ही नहीं थे। इसलिए जब आसपास लोग कम होने लगे तो घबराइए मत। यह इस बात का साइन है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। साइलेंस को अपनाइए, अलोन होने के वेपन को यूज कीजिए। जब पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन में खोई हो और आप अकेले डायरेक्शन में चल रहे हो, तो समझ लीजिए आप उस 1% लोगों में हैं जो अपने ड्रीम के पीछे सच में कमिटेड हैं। और जब आप अपने इस फेज से निकलेंगे तो ना सिर्फ आप कामयाब होंगे, बल्कि आप वो इंसान बन चुके होंगे जो भीड़ में भी अकेले खड़े रह सके और अकेले में भी खुद को पूरा महसूस कर सके। सक्सेस की असली ब्यूटी यही है, वो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। तो अगर आज आपको लगता है कि मैं अकेला हो गया हूं, हो गई हूं, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने भीड़ से निकलने की हिम्मत की है, और यही हिम्मत एक दिन इतिहास बनाएगी। तो यह था मेरा आज का ख्याल। मैं फिर से ऐसा ही एक और ख्याल लेकर आऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। Now up next on the show, on the Positive Influencer Show, is Shalini Modi, a voice of calm in a chaotic world. She shares the lesson and the power of Lord Narayan, drawing from ancient scriptures to inspire the present. Shalini's anecdote is not just spiritual, it's as much personal. A step-by-step path to soulful renewal, straight from the heart of our traditions. Shalini Modi brings a powerful message. Here is her video. Namaste. I'm Shalini Modi, an author with interest in our ancient Indian scriptures.
which have numerous stories of bhaktas and importance laid on Naam Jap or taking the Lord's name. One such story is about Ajamal, who was a Brahmin boy born in the city of present-day Kannauj. He grew up learning the Vedas and the scriptures, and as a young man, he practiced yagyas, Naam Jap, sacrificial fire, and he was gentle, kind towards strangers and his elders. He had all the desirous qualities of a good individual. One day he went to the forest to fetch flowers, fruits, wood for the sacrificial fire, as well as kusha grass, a sacred grass for his father. On his return, he saw this reckless man, indulgent and drunk on alcohol, sporting a young woman who was half naked and herself was intoxicated. He was filled with passion on seeing them wrapped in each other's arms. Lust got the better of him, and no matter how hard he tried to calm his mind, he could not get out of his mind this act or this show of love and intimacy. Despite of having so many positives in his life, like his father's wealth, his virtuous wife who was still in her youth, and his Brahmin birth, he gave up everything for this woman he had seen in the woods and started living with her. He spent all his father's money on her and finally started using unjust and reproachable means of earning money. He would steal, carry out robberies, and he even started killing living beings to feed his family their meat if food was not available. He had 10 boys from this lady. The youngest was named Narayan. His life was questionable, and so the society decided to abandon him or distance him from the society. One day, when he was 88 years old, Yamdutas approached him as the time had come for his death. These were 3 Yamdutas, big looking, scary looking men with wry faces, hair standing on the head and nose in the hand. Seeing them, Ajamal was agitated and he cried out to his youngest and most favorite son, with whom he had deep attachment. He carried out and called out his name, Narayan, Narayan, with great urgency. Hearing a dying man carry out or shout out Narayan's name, which is also Lord Vishnu's name, his messengers came running for him, and they stopped the Yamdutas who were tearing apart his soul from his body. When asked for an introduction, they gave them their introduction, explaining how they were the Dutas or messengers of Lord Narayan. Then, to explain the Yamdutas why they had come, they asked them, "Tell us, how or who would you term virtuous?" The Yamdutas said, "We have heard that someone who follows or carries out his life according to the Vedas is a virtuous person. Lord Narayan himself is the Vedas, as they came out from him, emanated from him, from his nostrils, while as a process of respiration, which was done on his part without any conscious effort." The messengers of Narayan then explained that this man had taken the 4-syllable name of Bhagwan called Narayan, and therefore all his sins had been mitigated. And this specially held truth at the time of death, because he had taken the word Narayan or called out Narayan's name exactly at the time of his death, when no other sin could have happened or carried out. Therefore, he was free from sins not only of this life but of many, many lives before, and now did not deserve to be taken from the path of sinners. In fact, he had earned Bhagwan's grace. The Yamdutas were convinced by this argument, and
and released the soul from their nose and went away to their boss Yama to narrate the whole story. Once free from their nose, Ajamal was normal, he was rid of fear, and he bent down to pay respect to Narayan's messengers. Narayan's messengers went away immediately, but the conversation that they had had with the Yamdutas stayed back in Ajamal's mind. He realized his folly of giving up his virtuous life for a life soaked in sensory gratification. He instantly left for Gangadhar, or which is presently known as Haridwar, and choosing a spot, turned his senses inwards and focused his mind on Bhagwan Narayan. He was completely absorbed by the thought of Narayan, the name of Narayan. And that's when the messengers came again. And this time they had come to take him to Vaikunt, the abode of Sri Hari, Vishnu, Narayan, whatever you may call him, the spouse of Shri, the goddess of prosperity and well-being. Namaste. And now that's all we could pack in for you in episode 16 of the Republic Positive Influencer Show. I hope you enjoyed it as much as we did at Republic, and of course, the positive influencers did in terms of putting it together. Before I sign off, if you would like to be a Republic Positive Influencer, drop that video sample. Head over to www.republicpositiveinfluencer.in and we'll be screening your video sample. We'll be back in the next episode getting you more content from our ever-growing pool of phenomenal positive influencers. Have a great weekend. Thanks so much for watching. केसरिया से मन जोगी हुआ रे दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे केसरिया से मन जोगी हुआ हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया के अंदर। प्लेन वालों ने इंक्वायरी नहीं की, ऐसे ही प्लेन उड़ा दिया है, ऐसा समझ में आ रहा है। ऐसा होता नहीं है, ये कोई स्कूटर नहीं है कि वो फ्यूल नहीं पहुंचे। ये फ्यूल पहुंचने की बात मैं मानता नहीं हूँ। किसके बारे में क्या है, फ्यूल का प्रॉब्लम है, इंजन का प्रॉब्लम। The reason we've launched the Nationalist Collective is because we believe it is time now for a group of ideologically driven Indians to drive the destiny of our country. For far too long, people who have had interests inimical to national interest have held sway. We need to put nationalism first, nation first. The Nationalist Collective is a very clear and sharp movement, presents the spirit of a new India which stands by what is right, does what is right, and raises its voice for what is right. Remember, this country is safe only if it is in the hands of nationalists. This country will grow only if nation first becomes our principal motto, where the only ism that matters is nationalism. Join the Nationalist Collective. It is going to be the largest non-political movement in this country.
Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. Huge controversy breaks out over preliminary crash report. Pilots Association questions report and leak of the report. Regional tensions escalate into violence in Maharashtra's Virar station. A rickshaw puller reportedly from North India was brutally assaulted by Uddhav Sena and MNS workers for not speaking Marathi. Horrific hit and run incident in Delhi's Vasant Vihar area comes to the fore. 5 people on the footpath run over by a drunk driver in a white Audi car in the early hours of July 9th. Drunk driver arrested, let go on bail. Election Commission sources have informed Republic that large number of people from Bangladesh, Myanmar and Nepal have been found in the voter list in Bihar. A very good afternoon, viewers. It's 3 p.m. and you're watching